So I'm sure most of you would know that the SAT now is digital. By digital, we don't really mean that you have an option to take it at home. Digital pretty much means that you will be taking it either on a laptop or a tablet, but you'll still have to go to some of the centers for the SAT. And either you can take your own devices with you, and if you do not have a device with yourself, so what you can do is you can let the college board know 1 month in advance that you won't be taking or bringing your own laptop or a tablet. So they could ship it for you or arrange it for you there in your examination center. They'll be asking you for some of the proofs because in the SAT August attempt, abhi kuch bachchon ne college board ko bola ki we won't be bringing our own laptops and tablets. So the college would ask them for some sort of proofs, and then one of the counselors has to vouch it for you. You don't have a device with yourself. ये थोड़ा सा एक नई चीज है, which we didn't know until the August attempt. So ये थोड़ा सा एक lengthy process है. So you'll have to let college board know in advance that you won't be bringing your own laptop, and then they'll ask for some sort of verification, and then they'll be arranging it for you. Since you guys will be appearing in the October attempt, beta. So your SAT will be taken on 7th of October 2020. If there's anything that you don't know from this page, from this slide, please do copy it from Agish. Ashwita, in the digital ST, we have a total of 4 modules. So the reading and writing section have 2 modules. Each of the module in the reading and writing section will be lasting for 32 minutes. And the maths portion beta, we have 2 modules as well. The maths modules will be lasting for 35 minutes each. So in English and reading and writing, basically, there will be a total of 54 questions, and you'll be having 64 minutes for them. In maths portion, we're going to have a total of 44 questions, and we'll be having 70 minutes for them. 25% of the questions in mathematics are students produce response or graded questions. By that, we mean that you have to manually put in the answer through a keyboard. 75% of the questions and the maths are MCQ questions. So you'll be choosing the correct option, either A, B, C, or D, depending upon the correct answer, beta. Also, beta, please know that the SAT now is adaptive. By adaptive, we mean that the difficulty level of the second module will be depending on how you perform there in the first module. So if you do pretty well on the first module, the second module will be harder. And if you don't do well on this first module, for each of these reading and math section, so the second module in that case will be easier. But please do understand that if your second module or the questions in the second module are harder, so in that case, they will be a bit lenient in marking. And let's just say your second module is easier if you don't perform well in the first module. So the marking here will be pretty strict. Are we clear with that? So even though it's adaptive, but please understand they won't be giving you same marks for easier and harder questions. If the questions over here in the second modules are hard, so they will be a bit lenient in the marking and grading. And if the questions here are easier, so they will be strict in the marking. If you feel like noticing it, so please, because you can. अगर आपको कोई note लेने बेटा, please keep taking notes. If you need to borrow a sheet, आप ले लें, please.
अच्छा बेटे, the SAT is graded out of total of 1600. But please understand that the SAT is graded on a scale of 400 to 1600, not on a scale of 0 to 1600. By that I mean, if you were to simply register for the test and don't put in any of the answers, even then you'll be getting 400 points. You won't be getting a 0 if you were to stay absent there on the SAT. Even in that case, you will be getting a minimum of 400. So the SAT is not graded on a scale of 0 to 1600. It's graded on a scale of 400 to 1600. We have a total of 800 for the reading and writing sections, and we have a total of 800 for the math section. There's some of the prerequisites for you to take the SAT. A, you must get yourself registered with the College Board. So you can go to this website, sign up there, fill in your relevant details. And since most of the candidates in our meeting and even in the physics class are from Karachi, the seats in Karachi tend to get filled very quickly. So होता ये है seats का कि they tend to get finished really early here in Karachi, but think of this website as Facebook. You'll have to keep checking it 5 times a day if seats run out. So what really happens is that they keep adding seats throughout the day. So what really happens is that you may check the seats at 9 a.m. and may find no seats, but if you check again at 12 p.m. you may find some of the seats, and then if you check again at 2 p.m. you may find no seat again. So just in case if you find no seats, you'll have to keep checking throughout the day. But for now, there will be plenty of seats for the SAT October attempt. B beta, you must have a valid passport in order to take the SAT. Birth certificate and pay forms or any other form of identity is simply not allowed. You must have a valid passport. Now, by valid, I mean it must not be expired. B, your name on your passport must exactly match the name on your college board ID. For example, if you spell your name like this, Mohammed, Ahmed, on your passport, and if you mistakenly fill it like this on your college board details, Muhammed, Ahmed, so they won't let you take the SAT. They would assume that you're possibly a different person. हाँ, अगर कोई invigilator आपका trained नहीं है, या let's just say if you happen to go to a center that is new or that is not familiarized with these details, so maybe you can get lucky, but the centers which have been taking the SAT for a while now would know this information, and there have been times when people have mistakenly spelled their names wrong, and then the college board officials simply did not let them take the SAT. तो आपको ये make sure करना है कि आपका जो name है passport पे वही details अपने college board की ID के ऊपर भी put करनी है, because what usually students do is कि sometimes students have two or more spellings for their names, so make sure कि जो आपके passport पे spelling है आप वही college board की details पे भी put करें. And again, you need to carry your passport on the day of your SAT beta. Any other form of identity is not allowed. If you don't have a valid passport, please get it made. There's plenty of time. You can get made one now. So आपका SAT 7th of October को है, तो you have plenty of time. You can still get one made. So please उसको जरा लिख लें, क्योंकि बच्चे ये बहुत भूल जाते हैं. In my teaching career, there have been 10 to 15 students so far, or possibly more, who forgot their passports on the day of the SAT. तो फिर वो मेरी भी effort भी waste जाती है, बच्चों की भी जाती है, सारी चीजें फिर problem होता है बेटा. तो उसको please लिख लें.
Actually, but talking about the scores requirement, it really depends on where exactly you're applying. If you're applying to one of the Ivy Leagues university, you should be targeting a minimum of 1450, but that really doesn't mean कि आपका admission कोई 1450 पे हो जाएगा. There have been times जब 1550 पे बच्चों को admission नहीं मिलता, लेकिन मैं bottom आपको बता रहा हूँ कि you need a bare minimum of this. But if you have this, so then the rest of your profile should be really good. A profile के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, आपकी grades, आपकी internships, आपकी ECAs, आपकी participations, आपकी दूसरी achievements, अगर आपने कोई internships करी हुई हैं वो, और आपके कोई voluntary experience है अगर वो, और भी बहुत सारी चीजें, आपके college essays. तो अगर आपका ये weak है तो make sure करना है कि आपको ये बहुत अच्छा हो. But please understand that your very good SCT score won't be making up for your average profile. If you have a 1580, but if you have a weak profile overall, तो ये compensate नहीं करेगा. इसकी weightage ज़्यादा है, ये भी matter करता है. But even if it's 1500, 1480, 1520, but this part is good, you're safe. But अगर आपका SCT का score बहुत अच्छा है, but आपके college essays, आपकी ECAs या आपकी दूसरी चीजें weak हैं, तो फिर ये कॉम्पिटिटिव हो जाएगा. आईवी लीग्स वैसे ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो अगर आईवी लीग नहीं तो फिर शूट फॉर टॉप 50 यूएस यूनिवर्सिटीज इफ यू प्लान ऑन गोइंग टू यूएस. बट अगर आप यूएस जाने के लिए एसपी दे रहे हैं, फिर प्लान, अगर आप आईबीए के लिए या लम्स के लिए दे रहे हैं, तो टॉक अबाउट इट इन अ बिट. अब यूएस स्टेट यूनिवर्सिटीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैंने बेयर मिनिमम लिखा हुआ है. इससे नीचे भी लोगों के एडमिशंस हो जाते हैं. आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग एडमिशंस ऑन 1130, 1100, पर डिपेंड करता है कि आप जा कौन सी यूनिवर्सिटी में रहे हैं. लेकिन 1200 से बेटर यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती हैं. बेटर वो जिनके बच्चों के 4 इयर्स के बाद जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होते हैं. 1200 इज बेयर मिनिमम. आइडियली द बेटर स्कोर यू हैव, द मोर चांसेस यू हैव. तो ये वाली चीज है, लेकिन ये बेयर मिनिमम है. मतलब इसका ये मतलब नहीं है शुड बी टारगेटिंग 1200, यू शुड आइडियली बी टारगेटिंग 1550. Lumps, again, this may surprise you, sir. I have seen people not getting in on 1450, तो आपने यहाँ पे 1200 क्यों लिखा हुआ है? तो बेटा lumps, of course, is a university. It has many colleges in it. अब डिपेंड करता है कि आपको lumps के बिजनेस स्कूल जाना है, आपको मैनेजमेंट स्कूल जाना है, आपको सोशल साइंसेस के स्कूल जाना है, साइंसेस के स्कूल जाना है, डिपेंड करता है. तो lumps में बच्चों को एक्सेप्टेंसेस जो है 1200 से आ रही होती हैं. बट इफ यू विश टू गो टू वन ऑफ देयर मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम्स, हानिया बेटा, तो वी नीड टू टारगेट समथिंग अराउंड 1450, 1470. लम्स के लिए एक इम्प्लाइड रिक्वायरमेंट ये है, बेटा आप लोग बाद में बात कर लेना, इससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ. एक इम्प्लाइड रिक्वायरमेंट ये है कि लम्स में के लिए आपके पास ओ लेवल्स में 5 A's होने चाहिए. 5 A's regardless of your SAT scores. If you do not have 5 A's in your O levels, तो आपको एक्सेप्टेंस कभी भी नहीं आती लम्स. ये बहुत प्रूवन है, we've been seeing it over the years. लम्स does not public this information. हाँ, अगर वो आपके स्कूल में कभी आएंगे, कभी आपके साथ सेशन करेंगे, कभी Q&A सेशन होगा, then only they may be able to tell you this. But ये implied requirement है, उन्होंने कहीं वेबसाइट पे नहीं बताया हुआ, कहीं नहीं बताया हुआ, but ये एक चीज है लम्स की. So again, if you wish to apply to one of their most competitive program, try something around 1470, 1480. Grades की requirement लम्स के लिए 2B1C A levels के लिए. बेटा अगर ये if you feel like copying it तो copy कर लें, फिर हम आगे चलते हैं.
बेटा फॉर IBA डिपेंड्स कि आपको कौन से प्रोग्राम में जाना है, लेकिन अगर आपको let's say अगर आपको BBA में जाना है तो you need 1270 to get the test exempted, and even for the BS programs we need 1270. If you're targeting a direct admission, try something around 1470 plus. Though this time around in IB round 2, for which we have the result few days back, जिसका भी स्कोर 3090 था, तो उन्होंने इंटरव्यूज एग्जाम कर दिए थे. तो these kids simply got the direct admission. By direct admission we mean that you won't have to sit for the interview. I'm assuming that most of you would possibly be naturally be applying to IBA besides the other universities. So beta please understand कि IBA का जो direct admission है यही advisable है. Interview IBA का थोड़ा सा comparative भी होता है और थोड़ा सा non-traditional भी होता है. जो आइस ब्रेक करने के लिए जो क्वेश्चन वो करते हैं वो तो यही होता है, जिस तरह जॉब्स के इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ. Then it's okay, why exactly do you plan on applying to IBA and why not some other universities? Why BBA? And if you have physics, chem, maths in A levels, so what makes you think that you should actually come to a business school? इन सारी चीजों को justify करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. Of course इसके लिए sessions होते हैं, but it gets pretty hard. फिर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इफ यू से कि इट्स मैथ्स तो आपको कोई कैलकुलस का क्वेश्चन दे देंगे कि इसको सॉल्व करो. इफ यू से कि इट्स फिजिक्स तो आपको कह देंगे अच्छा ये प्रिंसिपल है इसको एक्सप्लेन करो. इफ यू से उर्दू तो दे वुड आस्क यू कि मीर मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर की पोएट्री का डिफरेंस बताएं. इफ यू से इंग्लिश तो दे आस्क यू क्वेश्चंस लाइक कि व्हाई हैज चार्ल्स डिकेंस फैंटेसाइज्ड सो मच इन हिज राइटिंग्स. ये रियल क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जो इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं. Just be careful कि आप अगर IB के लिए जा रहे हो तो shoot for the direct admission. That's safe. Interview, that means you've added another layer of worry for yourself because IB के interviews historically थोड़े से notorious हैं, मुश्किल होते हैं. स्पोर्ट्स में आपसे वो अभी मेरे एक बच्चे से उन्होंने कुछ टाइम पहले ये सवाल किया था स्टूडेंट से कि आपकी फेवरेट फुटबॉल का क्लब कौन सा है. That was around 2020 just by the way, 2019. तो उसने बताया कि चेल्सी. तो द फॉलो अप क्वेश्चन वाज कि चेल्सी के ओनर ने अपनी वेल्थ किन किन बिजनेस से अर्न करी है. दैट्स समथिंग दैट यू वुड प्रोबब्ली नॉट नो. तो इसलिए IB के लिए जस्ट इन केस इफ यू प्लान ऑन अप्लाइंग टू IB एट ऑल तो बेटा प्लीज गो फॉर द डायरेक्ट एडमिशन. सो बेटा एज ऑफ नाउ वी आर स्टैंडिंग हियर. College Board has added this new item for this year. I'm not really sure if they'll continue with this. Because previously they added SAT September as well, but they revoked it after one attempt. So I'm not really sure if this is here to stay. But आप अभी SAT October में दे रहे हो, November में दे रहे हो. For most of the universities, you must get done with the SAT by SAT December or earlier. अब डिपेंड करता है कि अगर आप IB अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर IB के लिए आपके पास तो ये सारी आइटम्स हैं October, November, December, round 1, March, round 2. But if you plan on applying abroad, so better this is the deadline. You must get done with your SAT by this date. Asha beta, just to clear the meaning of the word adaptive once again for you guys. Like I said, the level of difficulty on module 2 will depend on how good or bad you perform there on the module 1. So let's just say हम 2 स्टूडेंट्स की बात करें. अगर किसी बच्चे का एक डिफिकल्ट टेस्ट है and if he scores 48 out of 54 on the English section and he scores 40 out of 44 on the math section, and let's say if he took a difficult test, by that I mean he did pretty well on module 1 and consequently his module 2 quizzes were harder as well. Same goes for math. He did pretty well on module 1, and of course then the module 2 questions were difficult as well, and he got this. Student B, if he gets the same number of questions right, 48 out of 54 and 40 out of 44, but if he didn't do well on module 1, or for some reason he didn't get as many questions right in module 1, which is why his module 2 became easier,
than his module 1. But despite that, he got the same number of questions correct as student A. So this student will be getting a total of 730, let's say, assuming, and this student will be getting a 700. Why exactly would that happen? Because this student A, took a difficult test. Both of his modules were difficult. In this case, both of his modules were easy. And same goes for maths. If this person got a 40 out of 44, so he will be getting a 720, but this kid will be getting a 690 beta. So again, ये depend करता है. I mean, your total score won't be really depending on how many questions you get right or wrong in the two sections, reading and maths. It will be depending on the difficulty level of the test. बेटा तो adaptive को आपने थोड़ा सा समझना है, क्योंकि college board या SAT अभी adaptive हुआ है, but there are other standardized tests that are adaptive. For example, GRE is an adaptive test, GMAT is an adaptive test. So we've been teaching those tests as well for a really long time now. तो उन सब में भी ऐसा ही होता है. तो college board is a bit late to this change, लेकिन it's a good change. लेकिन adaptive की meaning आपको अच्छे से समझनी है. तो you need to make sure कि you're doing pretty well on your module 1. इससे होगा ये कि फिर आपकी जो grading है module 2 में वो थोड़ी सी lenient होगी. So even if you were to get some questions wrong in module 2, that they won't be deducting as many marks as they were in the other case. So make sure you're doing pretty well on your module 1, so that आपके module 2 की जो marking है या grading है वो lenient हो जाएगी. If you don't do pretty well, if you don't do well on your module 1, तो आपकी ये वाली grading strict हो जाएगी, क्योंकि फिर वो आपको module 2 में algorithm जो है या जो software है या blue book का, वो आपको easier question दे रहा होगा. Are we clear बेटा? उसको जरा आपने, if you want to take some notes, आप ले लो बेटा, फिर हम आगे चलते हैं. क्वेश्चन आपके बेटा? बेटा स्कॉलरशिप्स के बारे में करें, थोड़ा सा बात कर लें, बिकॉज इट्स मोर ऑफ एन ओरिएंटेशन क्लास अभी जो हम पूरी डिस्कशन कर रहे हैं. तो I tend to meet a lot of kids who don't apply to IBA or LUMS just because they tell me, even in round 2 over here in this campus, we had kids from good schools who were not simply applying to IBA, even though IBA is in Karachi, just by the way. So just because we can't simply afford the fee for the IBA. तो पहली तो चीज़ आप ये clear कर लो, if you're not applying to IBA or LUMS, thinking कि सर मैं fees afford नहीं कर सकता यहाँ की. So both of these universities want you or require you to get the admission first, and both of these universities have a financial assistance department, and they'll be asking you to fill out a form, and then they'll be asking you for some of the details regarding your parents' income and the total dependence on your family. आपका घर किधर है, आपके घर कैसा है, appliances कितने हैं, थोड़े से personal questions होते हैं, तो provoke भी कर सकते हैं आपको कुछ questions उसमें, लेकिन वो एक उनका ड्यू प्रोसीजर है उनका. And then they tell you कि वो आपको कितनी scholarship दे रहे हैं. तो there have been kids who have gotten 100% of the scholarships. LUMS और IBA में बहुत सारे बच्चे, एक fair majority of kids जो है वो scholarship पे पढ़ी हैं. So please do not let your financial reasons be a hurdle for yourself, or don't let your financial reason discourage you from applying to IB or LUMS. बेटा अगर आप यूएस में अप्लाई करना चाह रहे हो तो बेटा बहुत ज्यादा बच्चों को एसटीटी के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत जेनरस स्कॉलरशिप भी मिलती है, फुल राइड भी मिलती है, फुल राइड से ऊपर भी मिल जाती है, 120% भी मिल जाती है. तो डिपेंड करता है, अगेन एसटीटी स्कोर एक फैक्टर है, बट देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. तो यूनिवर्सिटीज के लिए इनके जो फिजिकल किट्स के आपने अभी तक क्या होमवर्क करा हुआ है, बिकॉज इन योर A2, और अगर आप कोई इंटरमीडिएट का बच्चा है बी क्लास में, तो आपके इंटरमीडिएट के सेकंड ईयर में, तो आपको थोड़ा सा खुद भी बैठना पड़ेगा. और ये थोड़ी सी अनकन्वेंशनल सी एडवाइस है जो कि मैं अब दे रहा हूँ कि काउंसलर के अगर आपके पास ऑप्शन है स्कूल में, तो
कोशिश करो कि एक सीनियर काउंसलर के पास जाओ। कुछ चीजें that have come to my notice in the last few years is के जो counselors हैं, if you tell them कि I wish to apply to university A, I'm not like alleging or blaming someone here, लेकिन वो आपको कहते हैं कि नहीं आप यूनिवर्सिटी बी पे ही जाओ। अब होता ये है कि ये जो काउंसलर्स हैं ना, ये स्कूल के पेरोल के ऊपर भी हैं और ये यूनिवर्सिटीज के पेरोल के ऊपर भी हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वही काम कर रहे हैं जो कि वीजा काउंसलर्स कर रहे थे। वीजा काउंसलर्स अगर आप चले जाएंगे हमारी जिस बिल्डिंग में आप पढ़ रहे हो, उस बिल्डिंग में भी 2 वीजा काउंसलर्स हैं। तो वीजा काउंसलर्स आपसे तो 50,000 रुपीज ले लेंगे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से एक हैफ्टी अमाउंट लेते हैं एक बच्चा भेजने का। तो थोड़ा सा ना अपनी रिसर्च ज्यादा करो, काउंसलर के पास जाओ, वो आपको पुश करेगा कि आप एसेस लिखो, उससे अपने एसेस चेक करवाओ, मुझे भी दे दो, मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन अपनी रिसर्च ज्यादा करो। अपनी और ऑफ कोर्स मतलब इट्स वेरी इजी टू कंडक्ट द रिसर्च नाउ, सारी चीजें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो आप खुद देख सकते हो कि आपके प्रोग्राम कैसा है, उसके बच्चे कैसे हैं, पे स्केल्स तक आ रहे होते हैं। अगर आप चेक करो तो अभी क्लास ऑफ 2023 का तो नहीं, लेकिन क्लास ऑफ 2022 का जो ग्रेजुएट हो चुकी है लास्ट ईयर, इसका आपको पे स्केल वगैरह मिल जाएगा। ये मिल जाएगा वेबसाइट्स के ऊपर यूनिवर्सिटीज की कि वेयर एग्जैक्टली दीस किड्स आर एम्प्लॉयड। थोड़ा सा रिसर्च करके जाओ, ऐसे मत जाओ बिकॉज यूनिवर्सिटी ए लेवल्स की तरह नहीं है, दिस इज गोइंग टू स्टिक विद यू। तो ये एक ऐसी चीज है कि यू वॉन्ट बी टेकिंग इट ऑफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल और योर सीवी। ए लेवल्स, आई ग्रेजुएटेड इन 2012, मैं अब ए लेवल्स को मेंशन नहीं करूंगा बिकॉज दूसरी चीजें बहुत सारी हो गई उसके बाद। आप भी अपने ग्रेजुएट होने के 11 इयर्स बाद सर्टिफिकेशंस, एक्सपीरियंसेस, ए लेवल्स को आप मेंशन नहीं करोगे, बट द यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू स्टे देयर बेटा। तो इस चीज का थोड़ा सा हमने ख्याल करना है। कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में एसएटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में रिक्वायरमेंट नहीं है। आप प्लस होता है अगर आप लिख देंगे मेरा ये एसएटी स्कोर है, दे मे कंसीडर इट इफ दे आर व्यूइंग योर एप्लीकेशन होलिस्टिकली, तो वो उस चीज को फैक्टर इन कर लेंगे। टर्की में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको एसटी की बेसिस पे स्कॉलरशिप देती हैं, बहुत सारे बच्चों को मिलती हैं, बीट्स तबांसी, बल्कन, मीटू, डिपेंड करता है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। है, लेकिन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में या ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में मेजॉरिटी में कोई एसएटी की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। यूके में बिल्कुल नहीं है। यूके में आपके पास एडमिशन जो है वो आपके ए लेवल्स के कंडीशनल ग्रेड्स के बेसिस पे होते हैं। एएस में आप बताते हैं और फिर एएस में ही पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, तो जब तक A2 का रिजल्ट आता है तो उसकी बेसिस पे आपका कंडीशन एडमिशन होता है बेटा। तो बेटा थोड़ी सी मैं नॉन एसटी बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि एक थोड़ा सा काउंसलिंग वाला पार्ट, कि एसटी स्कोर्स जो है बेटा बहुत ज़रूरी होते हैं। ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि of course on the basis of the SAT scores we will be deciding which university we are eventually going to, if you are applying to a university that accepts SAT scores at all। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ जो हमारे पास कोविड में आ गई है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, उसको हम कहते हैं टेस्ट ऑप्शनल। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर तक थोड़ी कम, बट उससे पहले 2 इयर्स कोविड की वजह से यूनिवर्सिटीज जो थी वो टेस्ट ऑप्शनल थी। अब टेस्ट ऑप्शनल अभी भी हैं, लेकिन टेस्ट ऑप्शनल का मतलब ये है कि अब आपने अपनी वेटेज क्योंकि बेटा टेस्ट ऑप्शनल का मतलब ये है कि ठीक है अगर आपको एसटी के साथ अप्लाई करना है तो कर दें, अगर नहीं करना तो ना करें, आपके पास चॉइस है। लेकिन इफ यू गोइंग फॉर दिस चॉइस, जस्ट बी रिमाइंडेड कि अब आपकी रेस्ट ऑफ द प्रोफाइल के ऊपर बीट योर ग्रेड्स, बीट योर ECAs या बाकी चीज, बट इफ यू ऐड एसएटीज का स्कोर विद इट, तो दे हैव अ क्लियरर और मोर होलिस्टिक पिक्चर टू व्यू योर एप्लीकेशन। ठीक है, टेस्ट ऑप्शनल का ये मतलब होता है। अभी तक बहुत सारे बच्चे जिनसे मैं बात कर चुका हूँ लास्ट 2-3 इयर्स में पोस्ट कोविड,
तो वो समझते हैं कि सर टेस्ट ऑप्शनल है तो व्हाई डू वी नीड टू टेक द एसएटी एट ऑल। लेकिन जो जो जिन बच्चों को ये चीज़ क्लियर है कि टेस्ट ऑप्शनल के मीनिंग क्या है, तो टेस्ट ऑप्शनल का मतलब ये है कि अब आपने अपनी वेटेज बाकी चीज़ के ऊपर इंक्रीज कर दी है। तो बस एक ये चीज़ है बेटा। हाँ, जहाँ मैंडेटरी है वहाँ मैंडेटरी है बेटा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बेटा नॉन एसएटी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा काउंसलिंग के परस्पेक्टिव से, कि हमारे लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी इसलिए जाना ज़रूरी होता है क्योंकि एम्प्लॉयर्स जो है वो पहले रीच आउट कर रहे होते हैं या कैंपस ड्राइव्स कर रहे होते हैं। जिस तरह आपके ए लेवल्स के स्कूल में कैंपस ड्राइव्स पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वाले आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इंस्टीट्यूट्स वाले आते हैं और दूसरे लोग आते हैं कराची से, एंड देन यू गो टू देयर स्टॉल्स और आप इंक्वायर करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आते हैं। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत सारे एम्प्लॉयर्स नेचुरली पहले आईबी लंग्स जाते हैं, जिसमें यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रैकेट बेंकीजियर है, या दूसरी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, एंग्रो है हमारे पास। ये पहले इनके बच्चों को रीच आउट करते हैं। तो हमें नेहा बेटा एक अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों जाना है? बिकॉज एक चीज, और वो उसको मैं कहता हूँ एम्प्लॉयबिलिटी। तो हमें अपनी दानिया बेटा एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर काम करना है। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब ये है कि माई एबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर्ड इफ यू प्लान ऑन डूइंग अ जॉब एट ऑल। अच्छा, अगर आप आपको बिजनेस करना है, आप कह रहे हो कि नहीं सर मुझे तो जॉब करनी नहीं, इट्स वेरी क्लियर कि मुझे अबू का बिजनेस कंटिन्यू करना है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अब एक अच्छी यूनिवर्सिटी जाना, बिकॉज द वे वी डू बिजनेस इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। मतलब इफ आई वुड टॉक अबाउट ट्यूटर, तो मैं अपने पेरेंट्स को कहता हूँ कि मेरा काम तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। मतलब वी डिडंट हैव टू डील विद रिकॉर्डिंग्स बिफोर, Google Sheets before, Google Drive before, Zoom, Adobe की सब्सक्रिप्शन, Zoom की सब्सक्रिप्शन, Google Drive की सब्सक्रिप्शन। मतलब आई यूज्ड टू टीच ऑन व्हाइट बोर्ड, कॉपी कर लिया, नहीं है लेक्चर, अच्छा किसी और बैच में आके ले लेना। नाउ इट्स ऑल के सर रिकॉर्डिंग भी देना है, ये भी देना, वो भी कर देना, बहुत सारी चीजें। तो अगेन पहले कुछ भी नहीं होता था, एक आप फेसबुक पे पोस्ट कर दें, स्पॉन्सर कर दें आप, स्टोरीज ये वो, उसकी स्टोरी का साइज ये होगा, उसका ये होगा, वो सब डिजाइनर से हर चीज मैं नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि द वे वी डू बिजनेस इज चेंजिंग। सेम गोस फॉर एनी ऑफ द अदर बिजनेस एज वेल। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने फादर का बिजनेस, यू नीड टू मेक श्योर कि इफ ही हैज बीन मेकिंग और ही बीन अर्निंग 10 रुपीस, तो आपको देखना है कि मैं कैसे वैल्यू एडिशन करके उसको 20, 30, 40 पे, 50 पे लेके जा सकता हूँ बेटा। तो अब अगर आप नहीं जाते हो एक अच्छी यूनिवर्सिटी, तो आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते, आपके पास केस स्टडीज अच्छी नहीं होती हैं, आपके पास टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं, आपके पीयर्स अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। बच्चे क्या कहते हैं, सर बीबीए करने ना, मैं तो कहीं से भी कर लूँ, मैं तो इकरा भी चले जाऊँ, तो व्हाट डिफरेंस डज इट इवन मेक, मैं तो कहीं से भी कर लेता हूँ। एक और थ्योरी है कि सर बीबीए, अब तो देखें सर बीबीए तो थोड़ा सा आउटडेटेड भी हो चुका है, ये बच्चे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, या थोड़ा सा मार्केट्स में ज्यादा है सब बीबीए, तो मैं करूँ भी या ना करूँ। तो देखो बेटा, हर अच्छे ग्रेजुएट की हमेशा डिमांड होगी, बीट द बीबीए, बीट द सीएस के ग्रेजुएट्स। अब ऐसे सीएस के ग्रेजुएट्स भी हैं कराची में जो कि 6 मंथ से एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। ऐसे ग्रेजुएट्स भी हैं जो कि अभी 6th सेमेस्टर में हैं, बट दे ऑलरेडी हैव अ जॉब एट बेस एंड 2 लाख अ मंथ। तो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे अपनी स्किल्स ग्रो कर रहे हो। एक और भी चीज जो मैं बच्चों को अब कहता हूँ कि यू वॉन्ट हैव टू बी सोली डिपेंडेंट ऑन द यूनिवर्सिटी। नाउ यूनिवर्सिटी आपको चीजें इम्पार्ट बहुत सारी करेगी भी, पढ़ाएगी भी, सिखाएगी भी, लेकिन हम सिर्फ यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें थोड़ा सा यूट्यूब से, कोर्सरा से, दूसरी चीजों से भी बहुत ज्यादा सीखना है। बहुत सारी चीजें जो कि यूनिवर्सिटी थोड़ा देर से अडॉप्ट करेगी, या यूनिवर्सिटीज के अपने पास लिमिटेशन है कि यूनिवर्सिटीज के पास 48 कोर्सेज हैं, लेकिन एम्प्लॉयर को वो चीज चाहिए। अब यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी विश्व है, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास टीचर नहीं है, या आपके सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी वो कोर्स ऑफर नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपका लॉस हो रहा है। लेकिन जॉब मार्केट और दूसरी जगहों से बहुत सारी फ्री सोर्सेज हैं जिनसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैं अभी भी सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ काउंसलिंग की और दूसरी चीजों की। हमारे पास बहुत सारे काउंसलर्स हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन ही नहीं है, दे डोंट इवन एग्जिस्ट, कि
IEC एक प्रोफेशन होता है जिसको आप कहते हैं इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट, इसमें आप बच्चों को प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं सारी चीजें। लेकिन बहुत सारे काउंसलर्स ऐसे ही यूनिवर्सिटी के बनने के बाद वो कहते हैं अच्छा हम काउंसलर बन जाते हैं, लेकिन काउंसलिंग की भी क्वालिफिकेशंस हैं और सर्टिफिकेशंस हैं। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग हियर इज कि आपको अपने आप को थ्रू आउट इक्विप करते रहना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि मैं उसको ज्यादा थोड़ा सा बोरिंग ना बनाऊं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ बेटा कि यूनिवर्सिटी की जो क्वालिफिकेशन है तो वो दैट्स गोइंग टू स्टिक विद यू थ्रू आउट। जब आप 10 साल बाद भी जॉब के लिए जाओगे, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दे गोइंग टू आस्क यू इज वेयर एग्जैक्टली डिड यू ग्रेजुएट फ्रॉम और व्हेन एग्जैक्टली डिड यू ग्रेजुएट। यूनिवर्सिटी जाके भी हाँ ये बेटा मुझे अच्छा करना है, आई हैव टू ट्राई माय बेस्ट टू स्टे देयर ऑन द डीन्स लिस्ट, एक सर्टेन जीपीए, इंटर्नशिप्स अच्छी करनी है, कोर्सेज अच्छे लेने हैं। लेकिन ये सारी चीजें तब अच्छी होती हैं जब मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गया हूँ। if I haven't really made it to a good university, फिर प्रॉब्लम है। तो लाइक आई सेड कि हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना है बिकॉज़ वी विश टू इंक्रीज आवर एम्प्लॉयबिलिटी। अगर हमारी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं हुई अच्छी, एज इन आवर एबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर्ड, तो यू नो वी ऑल कीप कमिंग अक्रॉस पीपल on the internet or in our circle who have graduated from ABC universities and they're jobless, तो फिर बड़ा मसला होता है बेटा। तो एक अगेन एक अच्छे स्कूल को टारगेट करो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करो, डिस्कस इट विद as many people as you can who you think can guide you, और फिर उसके ऊपर काम करो। एक रॉन्ग अप्रोच एससीटी देने की दानिया बेटा वो ये है जो कि मैं देखते रहता हूँ, इट्स वेरी प्रिवेलेंट, वेरी कॉमन इन कराची कि हम एससीटी दे दें, जो भी स्कोर आया, अब 1150 आ गया, अब 1150 वाली यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे। Like top to bottom approach है, bottom to top approach है। You must have a university in your mind and then you must do work backwards from there। बच्चे क्या करते हैं कि एसएटी देते हैं, फिर देखते हैं कि स्कोर क्या आएगा, अब देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी इस ब्रैकेट में फॉल करेगी। इट्स अ टेरिबल अप्रोच। एक और भी चीज बेटा जो कि थोड़ी सी रेलेवेंट समझाने के लिए है काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव से, कि अभी हमारी एकेडमिक लाइफ है, मेरे अगर 10 स्टार्स हैं ओ लेवल्स में तो इट्स माय चॉइस कि मैं केजीएस जाऊं, लाइसेंस जाऊं या कहीं और जाऊं, because I am the buyer, I'm a customer हूं, I'm the one who will eventually be taking decision। और let's say मेरे नखरे हैं इस वक्त, एज इन नखरों का मतलब ये है कि I have lot of choices। अभी एक स्कूल मुझे 70% स्कॉलरशिप दे रहा है, 100% दे रहा है, सेलर इस वक्त स्कूल है। प्रोफेशनल लाइफ में the scenario is a bit different and in reverse as well, and it's actually the quite opposite of the academic life। यहाँ पे कस्टमर जो है वो एम्प्लॉयर है, वो मुझे पे कर रहा है, पहले मैंने पे करना था, तो विच इज व्हाई आई वाज मेकिंग द चॉइस। अब कस्टमर एम्प्लॉयर है, मैं सेलर हूँ। अच्छा एक चीज जो कि अभी आप, एक कोर्स होता है यूनिवर्सिटी में जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मोस्ट किड्स जो है आप लोग में से ये इसको पढ़ेंगे। एक चीज होती है नेहा बेटा यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ोगे अभी, उसको कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का दानिया बेटा मतलब ये है कि एम्प्लॉयर्स प्लान कर रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में हमारे इतने ग्रेजुएट, इतना स्टाफ हमारा जो है वो रिटायर्ड हो रहा होगा। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के होते हैं एमटी प्रोग्राम। अगर आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं तो यू कैन क्रॉस चेक विद देम, दे वुड एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज। उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो राइट आफ्टर योर यूनिवर्सिटीज बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपको अपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए हायर कर रहे होते हैं। यूजुअली दीज प्रोग्राम्स लास्ट फॉर अ ईयर और 2, और फिर जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप फिर मैनेजर हायर होते हो। तो फिर वो आपको अपनी लीडरशिप के लिए बेसिकली ट्रेन कर रहे होते हैं, बिकॉज दे डू नो कि हमारे इतने बंदे इस साल 65 की एज में या 60 की एज में रिटायर हो जाएंगे, फिर नए बंदे पीछे से आएंगे। तो इसको हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन का मतलब ये है कि वो अब देख रहे होते हैं कि इनके बाद नए जो जॉब्स होंगे या जो नए रोल्स होंगे उनको कौन टेकअप करेगा। तो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अपने कल्चर्स के बारे में ना बहुत ज्यादा वरी करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। फॉर एग्जांपल एंग्रो है, एंग्रो का एक कल्चर है। दराज, अगर आपने नाम सुना है तो दराज का भी एक कल्चर है। यूनिलीवर है, उसका एक बहुत अच्छा। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए विलिंग नहीं है कि वो अपने कल्चर को कॉम्प्रोमाइज करें, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को।
तो वो हमेशा सर्टेन यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को ही हायर करते हुए आए हैं, और दे आर नॉट विलिंग टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो वो नहीं चाहते कि कहीं और से एक बंदा आए who can't possibly fit in our culture, in their respective organizations culture। तो हमेशा सर्टेन यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने अपने एचआर डिपार्टमेंट्स को ये बहुत क्लियर बताया हुआ है कि या तो आईबी या लम्स या इंटरनेशनली भी ये यूनिवर्सिटीज। सो इफ यू आर प्लानिंग ऑन अप्लाइंग अब्रॉड, व्हिच आई थिंक यू शुड, तो मेक श्योर कि आप एक थॉरो रिसर्च कर रहे हो। मैं इसमें बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा सा एक बात क्यों कहता हूँ कि कहीं आप यूएस की इकरा यूनिवर्सिटी में अप्लाई मत कर देना, ठीक है? वहां पे भी बहुत ज्यादा इकरा यूनिवर्सिटीज हैं। आई गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो मेक श्योर कि आप एक थॉरो रिसर्च कंडक्ट करके जाओ इफ यू प्लान ऑन कमिंग बैक। इफ यू डोंट प्लान ऑन कमिंग बैक, फिर आप देखो कि आपकी क्वालिफिकेशन के बाद अभी जो आपका यूएस में वीजा होगा उसको हम कहते हैं F1 वीजा, स्टूडेंट वीजा को। उसके बाद आप देखो कि वो आपकी क्वालिफिकेशन की जॉब्स कैसे हैं, उस पर वर्क परमिट दे रहे हैं नहीं दे रहे। फिर आप देखो कि H1B की जब ड्रॉ होती है, इफ यू प्लान ऑन स्टेइंग देयर इन यूएस, तो उसमें जॉब मार्केट कैसी है आगे, क्या एम्प्लॉयर्स ज्यादा स्पॉन्सर करने के लिए विलिंग है इस किस्म के बच्चों को, इस किस्म के स्टूडेंट्स को, या ज्यादा विलिंग नहीं है। ये सारी रिसर्च आपको कंडक्ट करनी है इस ईयर में, इफ यू प्लान ऑन स्टेइंग देयर इन यूएस एंड इफ यू डोंट प्लान ऑन कमिंग बैक। अगर आप सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, इफ यू प्लान ऑन कमिंग बैक, तो एक डिफरेंट डिबेट है। तो फिर थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं, थोड़े से वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा देख के जाओ, एक थोरो रिसर्च कंडक्ट करो और देखो, फॉरकास्टिंग चेक करो। एम्प्लॉयर्स ऑलरेडी, रिक्रूटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जॉब्स फॉरकास्ट कर रहे होते हैं। रिक्रूटर्स वो होते हैं जो कि दूसरी कंपनी की बेसिस पे हायरिंग कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं, अगर आप गूगल करोगे तो उनकी सर्विस पढ़ो, देखो कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर फोरकास्टिंग, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका जो भी इंटरेस्ट है उसमें 4 years डाउन द रोड जॉब्स वगैरह कितनी आ रही हैं कितनी नहीं आ रही। और फिर वेदर यूएस में आपका एम्प्लॉयर, अगर आपको देखें, वो भी ऐसे नहीं हायर कर सकता, उसको भी पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना है कि आई बीन लुकिंग फॉर दिस पर्सन इन द यूएस एंड आई कांट फाइंड दिस पर्सन इन द यूएस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्किल सेट, व्हिच इज व्हाई आई एम हायरिंग हिम और हर। और उसको भी 2-3 मतलब एडवर्टाइज करना पड़ेगा। फिर आपको H1B वर्क वीजा मिलता है, और फिर H1B लीड्स टू ग्रीन कार्ड एंड सो ऑन। एक पूरी लंबी लंबी बहुत लेंदी रोड है। वो चीज़ें बात की हैं, वो चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाएंगी जब आप जाओगे पढ़ने। तो थोड़ा सा रिसर्च करके जाओ बेटा जहाँ पे भी जाओ। But some of the other universities that you could possibly apply to on the basis of SAT, so Zabas में we need a 1200, Habib we need a 1200, Nust में अगर आप नस्ट के business school जा रहे हो, then only can you apply on the basis of the SAT. But if you're applying to one of their engineering programs, तो फिर you'll have to take their own test that we call NET बेटा। तो आपको फिर वो देना पड़ेगा बेटा। I would like to demystify some of the myths here. एक तो चीज़ ये है कि सर वी डोंट हैव टू स्टडी फॉर एसएटी। कराची में थोड़ा सा ये कल्चर ज्यादा है कि बच्चे 2 मरतबा 3 मरतबा एसएटी देते हैं, एक मरतबा ऐसे ही देते हैं, दूसरी मरतबा देखते हैं अच्छा इसमें ऐसे पढ़ना था आप ये करेंगे, और फिर तीसरी मरतबा भी दे देते हैं, या तो फिर वो नेचुरली आईबीए का टेस्ट देते हैं। मैं एक और भी बात बहुत आपको फ्रैंकली, मतलब आई वॉन्ट बी शुगर कोटिंग इट फॉर यू। आई मीट अ लॉट ऑफ किड्स who tell me in August, July, June कि सर मुझे हार्वर्ड जाना है, एमआईटी जाना है, स्टैनफोर्ड जाना है। नेक्स्ट थिंग मे सरप्राइज यू कि वो वेरी नेक्स्ट ईयर वो ज़ेबस जा रहे होते हैं, सीपीएम जा रहे होते हैं। क्योंकि देखो, एक चीज होती है कि यू नीड टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। इसका मतलब ये है कि योर एक्शंस मस्ट मीट योर वर्ड्स, एंड वाइस वर्सा एज वेल। तो अगर आप विलिंग नहीं हो, खाली एम है आपके पास या विश है आपकी, बट यू नॉट विलिंग टू वर्क फॉर इट, तो फिर नहीं होगा बेटा। एससीटी में बहुत सारे बच्चे हैं। अभी आपका आजकल में हम 2-3 क्लासेस के बाद आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे, देन विल बी सिटिंग विद यू वन ऑन वन। फिर हम देखेंगे कि आपका स्कोर क्या है, आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज क्या है, उसमें स्कोर्स क्या है, और फिर हमें कैसे काम करना है। लेकिन अगर आप विलिंग नहीं हो पढ़ने के लिए, if you're not willing to put in hours, if you're not, or this मतलब I keep coming across this now after the change to the digital SAT कि सर डिजिटल SAT है, ये तो apparently बहुत आसान है, मैं क्यों पढ़ूं इसके लिए।
तो देखो यार, कॉलेज बोर्ड की हिस्ट्री पाकिस्तान से भी पुरानी है। कॉलेज बोर्ड एसटीटी को इतना आसान कभी भी नहीं बनाएगा कि सबके 1600 आ जाएं। अगर आ गए तो कॉलेज बोर्ड की अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी, और कॉलेज बोर्ड का बड़ा अच्छा कंपटीशन है एसीटी के साथ। आर वी क्लियर बेटा? कुछ स्टेट्स में एससीटी मैंडेटरी है यूज की, एवरीबडी हैज टू टेक द एससीटी। कुछ स्टेट्स में एसीटी मैंडेटरी है, एवरीबडी हैज टू टेक द एससीटी एसीटी देयर। कुछ स्टेट्स में चॉइस है। तो कॉलेज बोर्ड कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपना स्टैंडर्ड इतना कम कर दे कि यूनिवर्सिटीज एसीटी ऑप्ट करने लग जाए एसटी को छोड़ के। ऑलरेडी बड़ा अच्छा कंपटीशन चल रहा है, ठीक है? तो इतना आसान वो नहीं कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि बड़ा आसान पेपर है तो फिर स्कोरिंग बड़ी स्ट्रिक्ट होगी, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा आपको समझना है। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल एसटी में, और स्पेशली ये ओपिनियन तब बना जब बच्चों ने पायलट एसटी दिया। पायलट एसटी होता ये है कि एवरी टाइम देयर इज अ चेंज इन द एसटी, तो दे लेट यू टेक द एसटी फ्री ऑफ चार्ज। कराची में भी हुआ, तो लोगों के स्कोर्स बड़े अच्छे आए। तो व्हाट दे वांटेड टू टेल किड्स इज कि दिस इज हाउ द न्यू एसटी इज, and they simply wanted people to consider the new or the digital SAT instead of university's own respective tests, which is why they made it easy, which is why some of the kids scored well. लेकिन पायलट एसएटी के स्कोर्स कहीं पे एक्सेप्ट नहीं होते, वो खाली एक एक्सरसाइज है। आर बी क्लियर बेटा? मिथ नंबर 2 इज कि सर आई एम प्रीटी बैड इन मैथमेटिक्स, तो क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं हो सकता? देखिए बेटा, हमारे पास आईबी का टेस्ट जो है ना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है एसएटी से कंपैरेटिवली, मैथ्स का सेक्शन। तो वी हैव किड्स who want to do MBBS all their lives, but for some reason they don't end up in their desired medical college. And then what they decide is कि ठीक है मैं आईबी जाऊंगा या जाऊंगी, and they have a month to prepare, क्योंकि usually crash courses की मैं बात कर रहा हूँ, and crash courses tend to last for a month or 1.5 months। तो ये वो बच्चे हैं जिनको पूरी लाइफ जिनका एम वो होता है कि हमने डॉक्टर बनना है। मैथ्स में जीरो इंटरेस्ट होता है, मैथ्स पढ़े हुए भी कुछ टाइम हो चुका होता है, ए लेवल्स में भी कोई ऑफ कोर्स मैथ्स नहीं लेते क्योंकि बायोकेम फिजिक्स पढ़ते हैं। But then they decide कि अब हमें आईबी जाना है, and they have a month to prepare and cram all the syllabus, and they do it, they do pretty well, and they end up getting the admission। तो मैं उन लोगों की बात करता हूँ who literally hate maths, and but again वो लोग भी कर जाते हैं। तो अगर आप मैथ्स में वीक हो तो the only difference that's going to make for you guys is कि आपको थोड़ा सा ज्यादा पोटेंट करनी पड़ेगी effort, that is it। अगर आप वीक हो, अगर आप नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। All together we have 7 to 8 topics which you have not studied in O levels in the entire SAT, जो कि अब आप शायद एएस में पढ़ो। A2 का कोई भी टॉपिक नहीं है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता था वो भी नहीं। तो इट्स ऑल ओ लेवल्स के टॉपिक्स और एडमैथ्स के टॉपिक्स। अगर एडमैथ्स नहीं था तो एएस के टॉपिक्स, बट द वे दे आर टेस्टेड इज बिट डिफरेंट। वहां पे हम थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन करते थे, यहाँ हम थोड़ी सी स्मार्टर शॉर्टर कैलकुलेशन करते हैं। और अब कैलकुलेटर भी अलाउड है ऑन बोथ मॉड्यूल्स। प्रीवियसली एक सेक्शन में होता था, एक में नहीं होता था, अब दोनों मॉड्यूल्स में कैलकुलेटर अलाउड है। Myth number 3 says, okay, sir, I've heard that no matter how hard we work, we won't be able to get a good score. तो वैसे भी नहीं है बेटा। It's again डिपेंड कर रहा होता है कि आप कैसी एफर्ट पुट इन कर रहे हो। यहाँ पे आपके टेस्ट होते रहते हैं उससे, and they're actually a pretty good way for you to check what score you will ideally be getting, और वो they're a true reflection or a near reflection of what your scores would be। तो उसके बाद मैं आपको खुद बताता रहूंगा कि आपका ये सेगमेंट अभी भी वीक है, इसके ऊपर काम करो, ऐसे ऐसे करो, नहीं करो। अगर फिर भी मुश्किल हो रही है तो डू रीच मी आउट, सिट विद मी, मुझे बताओ कि सर ये चीज़ मुझसे अभी भी नहीं हो रही सॉल्व, आप इसको कर दें, इसके कुछ सम्स मुझे करा दें, मेरे सामने करा दें, मुझे क्लास में समझ में नहीं आ रहा या मैं हेजिटेट हो रहा था। पूछो, उसको इम्प्रूव करो बेटा।
Expected, we're starting off our course from 17th of July. We'll be getting done with the course and queries and everything by 15th of September. उसके बाद हम खाली full length test कर रहे होंगे, both here and at home as well. Full length test में होता ये है कि it will be a proper 2 hour 14 minutes test, जो कि आपका digital essay का एक pattern है. उस टेस्ट के बाद आपका टेस्ट चेक होता है, then we discuss the test कि आप कहाँ पे wrong कर रहे हो, क्या गलतियाँ हैं आपकी, कैसे मिस्टेक्स को आपको ओवरकम करना है, what kind of errors you've been making. तो वो पूरी डिस्कशन हम इधर करते हैं बेटा. और फिर 7 अक्टूबर को आपका एसटी है, तो हम जो ब्लू बुक वाले टेस्ट वो भी लेते हैं, प्लस वी विल मेकिंग आवर ओन टेस्ट एज वेल. क्योंकि मैथ्स का सेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुआ, लेकिन इंग्लिश पोर्शन ऑन द डिजिटल एसटी हैज सीन अ मेजर ओवरहॉल. तो कुछ बच्चे अभी तक मैं देख रहा हूँ कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह के ऊपर मैं भी हूँ, तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो पुराने एसटी से ही पढ़े हैं. कुछ टीचर्स मैं देख रहा हूँ वो पुराने वाले एसटी का ही फॉर्मेट बताए जा रहे हैं. वो अभी तक मतलब एसटी ने, कॉलेज बोर्ड ने ऐसे रिवोक कर दिया था 2020 में, 2019 में. कुछ टीचर्स अभी तक बच्चों को बता रहे हैं कि ऐसे एसटी में ऐसे है. तो इसलिए थोड़ा सा भाई देख लो कि आप किससे थोड़ा सा एडवाइस ले रहे हो, ये भी थोड़ा सा देखो. तो जितने भी फुल लेंथ टेस्ट हैं प्लस डिस्कशन वो हम इधर करेंगे, बट इस बीच इधर हमारे टॉपिकल टेस्ट होते रहेंगे. And we may have one or two more full length tests over here, or possibly 2 or 3 full length tests over here. But this duration में हम खाली full length test कर रहे होते हैं बेटा. So that's how the course timeline is. But if you feel like copying it, तो अभी copy it. But for those of you who are online, if you have any questions till now, तो please आप पूछ लें. If everything is clear, तो बेटा please do let me know on the group. अनस बेटा क्लियर है, राफिया नूर बेटा क्लियर है, रयान सहमद शहबाज जैन बेटा क्लियर है, अलीना क्लियर सर. Clear, sir. अच्छा बेटा, व्हाट अबाउट खान एकेडमी? मतलब थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे खुद पूछते हैं. हम जितनी भी प्रैक्टिस आपके साथ कर रहे हैं, हम कॉलेज बोर्ड के कंटेंट की कर रहे हैं. इंग्लिश में आपके पास the way the questions are asked has changed, लेकिन ग्रामर में कोई नई चीज नहीं आई है. ग्रामर हैज बीन द सेम फॉर सिंस फॉरएवर, लेकिन टॉपिक्स वही हैं, बट द वे दे आर आस्क्ड हैज चेंज्ड. But क्योंकि we have been, or we had been keeping a track of the digital ST, which is why we were preparing it for a really long time. तो हमारे पास already जो content है वो सारा एक तो डिजिटल एसटी के लिए हम ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, मेजॉरिटी कर चुके हैं, और आपके कोर्स से पहले भी वो बाकी सारा हो ही जाएगा, मतलब टिल द टाइम यू रीच टू दोस टॉपिक्स. क्योंकि आपसे पहले अगस्त के बैचेस भी हैं हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि हम मार्च में ही, हमने लास्ट ईयर जब अभी मार्च का बैच करा था तो उसमें ही हमने सारी चीज़ें कर ली थी. तो हमारी सारी भी प्रैक्टिस, जितनी भी ड्रिल्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, वो सारी हम कॉलेज बोर्ड वाली देते हैं आपको. अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपकी अटेंशन में बताना यहाँ पे मैं चाहूँगा कि if you're considering any other book, be it the PDF, be it the hard copy, so बेटा please do it on your own, as in मैं थोड़ा सा रेकमेंड नहीं करता. मैं इवन खान एकेडमी को भी इसलिए रेकमेंड नहीं करता बिकॉज कॉलेज बोर्ड की इनके साथ एफिलिएशन है. आई एम नॉट कॉलिंग इट अ गुड और बैड सोर्स, दैट्स फॉर यू टू जज. कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, और मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा. बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि कॉलेज बोर्ड की खाली खान एकेडमी से एक एफिलिएशन है. व्हेन यू साइन अप फॉर द कॉलेज बोर्ड, दे सिंपली लेट यू टेक practice there on the Khan Academy, and even without signing up you can practice on Khan Academy. लेकिन Khan Academy का content कॉलेज बोर्ड ने टाइप करा था. So this content that you will be practicing on Khan Academy has not been written by a college board.
ये सेल खान ने लिखे हुए हैं ये वाले क्वेश्चंस। कॉलेज बोर्ड का कंटेंट डिफरेंट है। अभी जो कॉलेज बोर्ड ने सिर्फ पब्लिक करा है वो सिर्फ 4 पेपर्स हैं ब्लू बुक के, लेकिन हमारे पास जो कंटेंट है वो आपके पास पास पेपर से है। लाइक आई सेड कि कॉलेज बोर्ड ने द वे द क्वेश्चंस आर आस्क्ड दे हैव चेंज्ड इट ड्रास्टिकली, लेकिन चीजें वही हैं, एज इन पंक्चुएशन के रूल्स तो चेंज नहीं हुए, मतलब दे हैव बीन द सेम सिंस मैनी सेंचुरीज। तो पंक्चुएशन अभी भी कॉलेज बोर्ड टेस्ट कर रहा है, कॉलेज बोर्ड पहले भी पंक्चुएशन टेस्ट करता था, but the way those questions are asked has changed. But since we have a lot of content from the previous SATs, तो मैं सारी प्रैक्टिस यहाँ से कराता हूँ क्योंकि ये ज्यादा रेलेवेंट है। अच्छा, थोड़ी सी बात है, कुछ बेटा नॉन सीरियस बच्चों के लिए भी कर लेते हैं, बिकॉज we'll be talking about how to get a good score in on the SAT in the next 2.53 months. But एक चीज ये कि if you are not disciplined तो एसएटी में एक अच्छा स्कोर नहीं आता। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप कॉलेज, बहुत सारे स्कूल्स हैं उसमें, कराची में एसएटी मैंडेटरी है, इस्लामाबाद में कुछ स्कूल्स हैं एसएटी मैंडेटरी है, लाहौर में कुछ स्कूल्स हैं एसएटी मैंडेटरी है। तो अगर आप पीयर प्रेशर में, काउंसलर के प्रेशर में, पेरेंटल प्रेशर में एसएटी दे रहे हो, बट इफ यू लैक डिसिप्लिन, आपको नहीं पता कि आप क्यों एसएटी दे रहे हो, और डीप डाउन यू डोंट वांट टू डू इट बट यू डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, तो फिर अच्छा स्कोर नहीं आता बेटा। अगेन, अगर आप चाहते भी हो, आपकी विश है, बट इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन तो एक अच्छा स्कोर नहीं आएगा। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब इफ यू हैव 4 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इवन दो कराची ईट हमारे पास सेशन में नहीं आएगा, वो जनवरी में होता है, बट मैं कैसे एग्जांपल एक दे रहा हूँ कि अब आपको कराची ईट हर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जाना है और आप एसटीडी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा आपको एक अच्छे स्कोर के लिए, जस्ट टू बी श्योर कि मेरा स्कोर एक अच्छा आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा मसला है। इफ यू लैक दी स्ट्रेटजी, आपको पता ही नहीं है कहाँ से करना है, कैसे करना है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन इधर से सॉल्व कर रहे हो, किधर से कर रहे हो, किधर से कर रहे हो, लैक दी स्ट्रेटजी तो नहीं आएगा। नेहा बेटा, एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब है कि देयर विल बी डेज व्हेन यू won't be seeing any improvement despite trying your best। इसमें होगा क्या कि थोड़ा सा आपका स्कोर स्टैग्नेंट हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही होगी, या आप कह रहे होगी सर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, लेकिन ये चीज मेरा रीडिंग में मैक्सिमम स्कोर इतना ही आ रहा है। तो नॉट गिविंग अप at that very moment, or let's just say falling down and getting back on the saddle, is what we define as perseverance। So उस वक्त determined रहना, उस वक्त give up ना करना, उस वक्त अपना keeping your cool then is what we define as perseverance। कुछ चीजें बेटा जो इंस्टीट्यूट्स के पार्ट पे भी रेलेवेंट होती हैं, वो है एक तो टीचर्स का एक्सपीरियंस, एक है कि हम कितनी रेलेवेंट प्रैक्टिस करें। कहीं मैं ओल्ड एससीटी से डिजिटल एससीटी की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा। एक चीज है कम्युनिकेशन गैप, इसके बारे में वी हैव अ वेरी क्लियर पॉलिसी कि हम क्या कर रहे होते हैं, लेकिन अगर मैं भी आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। बट फॉर नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि यू गाइस विल बी स्टेइंग इन टच विद मी एवरी सिंगल डे थ्रू व्हाट्सएप। उसका हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है बेटा। थोड़ी सी मैं प्रेजर्वेंस की डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ आपको कि प्रेजर्वेंस इज बेसिकली ऑल द हार्ड वर्क दैट यू पुटिंग इन आफ्टर यू थिंक दैट you've already done all the hard work is what we define as perseverance बेटा। बेटा जो हमारी क्लास की टाइमिंग्स हैं वो होंगी 4 PM to 6 PM। आज हमें थोड़ा सा बच्चों का वेट करना था बिकॉज वो मीटिंग में आ जाएं, लेकिन ये टाइमिंग्स होंगी, काइंडली इनको नोट डाउन करें।
They kindly note down this also. अच्छा बेटा मैं थोड़ा सा क्लास को evaluate करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ. There are 25 questions altogether just to see के how good or where exactly you guys stand in terms of mathematics. That will give me a clearer idea of how to take this class ना. क्योंकि मुझे देखना होगा कि किसको कितना ऑलरेडी आता है, कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, और उसके बाद मुझे पता होगा कि मुझे आपको क्लास में कैसे लेके चलना है, पर्सनली क्या आपसे चीज़ें पूछनी है, मैं जब हमारे सेशन होगा तो तब क्या चीज़ें पूछनी है. तो ये क्वेश्चंस हैं, ट्राई दीज क्वेश्चंस, और फिर हम इनको डिस्कस हम नहीं करेंगे. विल बी फर्स्ट स्टडीइंग दिस चैप्टर्स एंड देन विल बी कमिंग टू दीज क्वेश्चंस. आई जस्ट वांट टू सी कि हाउ मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस यू गाइस कैन गेट करेक्ट. अगर आपको कोई पेपर पेंसिल कुछ बोरो करने हैं तो आप बाहर से कर सकते हैं. बेटा फॉर दोस ऑफ यू ऑनलाइन प्लीज हैव टू स्टार्ट. दिस इज आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले की हुई है मैंने द 25 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर. लॉग्स द चैप्टर लॉग्स नहीं है हमारे पास, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स है हमारे पास, एबीजीबी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक फंक्शंस नहीं है हमारे पास, ये सारी चीजें नहीं है, बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं है. मैंने आपको बताया कि बहुत बेस क्या क्या ये मैं आपको दिखा देता हूँ. दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन बेटा कि क्या क्या है. मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ. तो दिस इज द इंडेक्स फॉर मैथमेटिक्स. ये अभी 12th चैप्टर है, मैं और दिखा देता हूँ. यार मैंने एडवांस बहुत पहले पढ़ा होगा, मैं भूल गया कि एडवांस में क्या कहते हैं. नहीं है, एडवांस के टॉपिक्स हैं हमारे पास. नहीं
जस्ट टू वॉक यू गाइस थ्रू कि पेपर कैसे होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा बेटा, ये आपके पास एक पेपर वेरिएंट है, और पेपर वेरिएंट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादा हैं। ये डिजिटल एसडी का ही पेपर वेरिएंट है, बट देयर वॉन्ट बी अ पेपर वेरिएंट एनी मोर। एवरीवन विल बी टेकिंग द एसडी ऑन स्क्रीन ऑन अ टैबलेट, बट इन्होंने पेपर वेरिएंट में कॉलेज बोर्ड ने थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, बट आई एम जस्ट वॉकिंग यू थ्रू व्हाट द क्वेश्चंस वुड बी लाइक। तो आप पढ़ते जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो just skimming through the paper। इसको हम कहते हैं वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, बट these were supposed to know the vocabulary। कुछ बच्चों के लिए ये vocabulary बेसिक है, vocabulary मुश्किल है कि आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड कितना अच्छा है। अब कुछ बच्चों के लिए कैटास्ट्रॉफिक या एलुसिव या एब्रप्ट या इमिनेंट वर्ड्स कॉमन है। कुछ बच्चों के लिए vocabulary भी कंसीडर होता है, vocabulary एज इन डिफिकल्ट वर्ड्स में। आनिया नेहा बेटा, आप लोग देख रहे हैं? दानिया बेटा, we have graph based question, we had graph based question on the last SAT as well। क्वेश्चन टाइप को मैं आपको थोड़ा सा कुछ क्लासेस में बताऊंगा, अभी आपको इतना कुछ अच्छा समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बताऊंगा अभी तो विल बी ऑफ नो यूज। या आपके पास पंक्चुएशन के कुछ क्वेश्चन है, आई एम श्योर यू वुड अंडरस्टैंड कि क्या इसमें वो आपसे पूछ रहा है। फास्ट फॉरवर्ड टू मैथ्स, मैं मैथ्स भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आप बेटा टॉपिक पूछ रहे थे, तो ये लिनियर फंक्शन है, ये आपके पास ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, ये इंटीजर्स का एक क्वेश्चन है, ये स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है जी, फंक्शंस है। ये पैराबोला का एक क्वेश्चन है, ये फंक्शंस का क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं आ गया। ठीक है, ये इनइक्वालिटी से एक क्वेश्चन है, ये दोबारा फंक्शन का क्वेश्चन है, फिर दोबारा फंक्शन का क्वेश्चन है, सर्कल्स का एक क्वेश्चन है, ये पॉलिनॉमियल्स है, ये दोबारा फंक्शन है, ये आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। ऐसे बेटा